हाय जानीज, it's that time of the year again when I wish काश के मैं मीरा होती, नजर लगने से पहले उतर तो जाती। मुझ बेचारी को तो कोई ऐसी नजर लगी है कि पूरे 5 दिन से बिस्तर में पड़ी हूं, अपने, वो भी अकेली, तन्हा। डॉक्टर साहब के पास गई तो उन्होंने वही अपना फेवरेट पुराना डायग्नोसिस पेश कर दिया। कहने लगे, बेगम साहिबा, आपको वायरस हो गया है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं कोई कंप्यूटर थोड़ी हूं जो मुझे वायरस हो जाए। मैं तो एक हसीन, जमील, खूबसूरत और कभी कभी खूबसीरत लड़की हूं। जब से इन बेशर्मों ने अपने मिसाइल्स एक्सपोज कर करके दिखाने शुरू किए हैं, I was so scandalized. I mean, how vulgar can you get? Being an exhibitionist is one thing, but being a mad exhibitionist is another. मिसाइल दिखाए तो दिखाए, पर कम से कम उन्हें कंट्रोल में रखना तो सीखें। पर ये लोग जहां दिल आता है छोड़ देते हैं। And then we have tens of innocents die in what is conveniently termed as collateral damage. बुश जी, lateral pursuits के अंदर डैमेज का होना जरूरी नहीं होता। चलो, कोई बात नहीं, थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो शायद जान लेंगे, लेकिन पता नहीं तब तक कितने मासूमों पर कितनी ही आफतें ढाई जाएंगी, कौन भला क्या जाने। But thank God Shaukat has gone to America. I mean, with his experience of having been such a fine banker and now a prime minister, he might be able to put Bush to shame with his handling of any and all sorts of figures. चलिए छोड़िए, मैं भी क्या संजीदा गुफ्तगू लेकर बैठ गई सवेरे सवेरे। The fever is on. I'm not talking about the bird flu. I'm talking about the cricket fever. और आप सब तो जानते हैं कि मैं क्रिकेटर्स पे मरती हूँ। I mean, क्रिकेट पर मरती हूँ। अभी कल ही इंजी से बात हो रही थी। इंजमाम का निकनेम है, मैंने ही रखा है। मैंने कहा, समझ नहीं आता, तुम ज्यादा भारी हो या तुम्हारा नाम। तुम्हें तो हल्का कर नहीं सकती, चलो नाम ही हल्का कर दूं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? इंजमाम का बता रही थी। कहने लगा, नाजी, बड़ी पॉजिटिव चेंज आई है हमारी क्रिकेट में। मैंने कहा, क्या? अब हमारी क्रिकेट का जुआ माउंटी कालो में खेला जाएगा? कहने लगा, नहीं नहीं नाजी, अब तो हमारे क्रिकेटर्स बड़े शरीफ हो गए। सब ने नमाजें पढ़नी शुरू कर दी हैं, वज़ू करके आते हैं मैदान में, सब ने दाढ़ियाँ भी रख ली हैं और सब सिर्फ चाय पीते हैं, वो भी ज़्यादा दूध वाली। हाय, मुझे तो क्रिकेट के वो पुराने दिन याद आते हैं। क्या क्या हसीन प्लेयर्स होते थे हमारी टीम में। I mean, just to name a few, Ramiz Raja, Imran Khan, Zahir Abbas, Mansoor Ali, Pataudi, and the list is just never ending. और टीम में नज़र बट्टू के तौर पर मुश्ताक मोहम्मद को भी शामिल कर लिया जाता था। और आजकल की ये टीम, इसको तो नज़र लगने का कोई खतरा ही नहीं है, इसलिए तकलीफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हसीन क्रिकेटर्स का तो पता नहीं, हसीन मर्दों की कोई कमी नहीं। आज मैंने अपने यहाँ जिस पहले मेहमान को दावत दे रखी है, उसको मैं शाह जमाल कहती हूँ, यानी हुस्न का बादशाह। आप समझ ही गए होंगे, आप उसे जमाल शाह कहते हैं। आओ आओ तशरीफ लाओ, जमाल शाह। जमाल, तुम तो टीवी के अच्छे दिनों की तरह गायब ही हो गए। कहाँ हो आजकल? मैं तो यही हूँ बेगम साहबा। दिखाई क्यों नहीं देते? Well, I'm still around. आप मसरूफ़ रहती हैं। हाँ, बताओ तुम्हारी क्या मसरूफियात हैं जो वक्त नहीं निकाल सके पहले मुझसे मिलने के लिए? Well, one is busy in painting, sculpting, looking after हुनर कदा, and यही चीज़ें, और generally living. हाँ, I believe you're very good with your hands. बहुत कुछ बना लेते हो इन हाथों से। बताओ ना। If you allow me, I would love to do a sculpture of yours. अच्छा, let's start with हुनर कदा, which is माशाल्लाह a success story. तुम्हारी नज़र में पाकिस्तान के अंदर आर्ट स्कूल्स या people for young people who want to go into the fields of art, क्या स्कोप है? पाकिस्तान में तो अनलिमिटेड स्कोप है, बिकॉज
इस वक्त तक हमने सिर्फ सरफेस ही स्क्रैच की है, बिकॉज द कंट्री इज़ इमेंसली टैलेंटेड. इट इज़ अ कंट्री जो मतलब बिला मुबालगा आप कह सकते हैं कि 10,000 साल पुरानी ज़मीन पे सिविलाइजेशन का गहवारा है ये ख़िता, एंड वी हैव अ लिंक विद दैट सिविलाइजेशन. तो उस हवाले से जितने भी सोल्स यहाँ ज़िंदा हैं इस वक्त बीइंग्स बॉडीज़ में, सब में बहुत कुछ है कहने को. एंड इफ situation allows them, they can do wonders. Therefore, art schools की बड़ी सख्त ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है. We have a few very good art schools like NCA, which is an island in a country like Pakistan, which is amazing. NCA जैसी जगहें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हर शहर में, कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर, छोटे छोटे शहरों हर जगह होनी चाहिए. We should give art a real chance, because art एक ऐसी फील्ड है कि जिस ने कभी दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं किया है. It has served humanity. Art is a celebration of life for me. I understand. That's so true. और आर्ट के हवाले से जब बात की जाए, you've done various things related to the field of the various fields of art really. अदाकार हो, पेंटर हो, मुजस्मा साज हो, डिज़ाइनर हो. ये बताओ असल में क्या हो? What do you enjoy doing the most? I don't know. I think I'm more of a drifter. Whenever I feel like drifting, I drift into something. The thing is that maybe I'm interested in communicating. Whatever I have understood so far. ज़ाहिर है जो भी कुछ आप अंडरस्टैंड करते हैं या समझ पाते हैं वो आप अपने गिरदोपेश से ही लेते हैं. तो गिरदोपेश का जो भी जायज़ा मुझे अब तक नसीब हुआ है वो मैं किसी न किसी हवाले से कन्वे करना चाहता हूँ, कम्युनिकेट करना चाहता हूँ. चाहे वो ज़रिया मुझे उसके लिए पेंटिंग का मिले या स्कल्पचर हो या लिखने का ज़रिया हो, म्यूज़िक हो, whatever. I mean, I think I'm blessed. इसलिए कि ये तमाम चीज़ें interrelated and it's so it allows you to do things in all these various fields so comfortably. But I tell you one thing really, I can so relate to you now. You said you're a drifter. I'm a drifter. Ever Really? since my husband passed away, I've been just drifting from here to there. You know how it is. Well, I mean, you've been drifting into many things, yeah. Are you a sensitive person, Jamal? What are the things you feel very passionately about in life? It'll be presumptuous to say that I'm sensitive, and also a cliched statement. I think every human being is sensitive to something or other. Yes, maybe I am, yes, like everybody else. I am sensitive. I have nightmares too, but Jan, let me tell you, I wouldn't advise stimulants, huh? Not at this early age, really. Jamal, जब मैं TV देखती हूँ, the TV of the good days of TV और आज का जो TV है, तो मुझे लगता है कि TV, especially in this part of the world, हमारे मुल्क में वो कंटेंट खो रहा है, वो ताकत खो रहा है अवाम तक पहुँचने की. इसकी क्या वजह है? बुनियादी तौर पे हर दौर में अच्छा बुरा काम होता रहा है. माजी में भी बहुत सारे ओवररेटेड लोग थे और बहुत सारे जेन्युइनली टैलेंटेड लोग भी थे जो उन ओवररेटेड लोगों की तरह मशहूर नहीं हुए. और आज भी बड़े ठीक ठाक किस्म के समझदार लोग हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो सुपरफिशियल हैं जिनको काम करना नहीं आता है. तो आई वुड से कि ड्रामा हैज़ सफ़र्ड इन अ वे कि जो हमारे ड्रामे की स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा वाज दैट इट वाज despite all the censorship still realistic. The issues that the Pakistani drama addressed on television was varied, and the range was amazing. And therefore एक ख़ास किस्म का temperament, ख़ास किस्म का tempo उसका बना, which was not glamorous, which was realistic, which was probing. In a very veiled way. चीज़ें आपको नज़र आती थी, criticism भी आती थी. राइटर्स बड़े सेंसिटिव, बड़े अच्छे राइटर्स थे. दे रोट एक्सलेंट स्क्रिप्ट्स. बड़े अच्छे डायरेक्टर्स ने उनको प्रोड्यूस किए एंड अमेजिंग एक्टर्स. तो और वक्त भी उनको खासा मिल जाता था बिकॉज देयर वाज ओनली वन चैनल
और एक चैनल जो है कराची या लाहौर या बहुत तीर मारा तो क्वेटा ने पेशावर ने कोई प्ले किया, तो तमाम प्लेस पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ करती थी और कंसंट्रेशन ऑफ द टॉप मोस्ट टैलेंट वुड बी इन सम स्टेशन से लाहौर और कराची, और सबके कोऑर्डिनेशन से बड़ी अच्छी प्रोडक्शंस बनी। रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि वी गेव इन टू कमर्शलिज्म। Commercialism is always ruthless and mindless and it destroys, it devours everything, तबाह कर देता है अगर आप चेक ना करें कमर्शलिज्म। बिल्कुल सही। कमर्शलिज्म जो है वो कॉमर्स तो आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत ही वाइटल एस्पेक्ट है, लेकिन अगर आप एक बैलेंस्ड वे में उसको लेके चले तो ठीक है। जेन्युइन कंसर्न्स अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो चीज़ें अच्छी बनती जाती। आजकल हमारे ड्रामे की वो स्ट्रेंथ जो रियलिस्टिक ड्रामे की थी वो हमने खो दी है इन ट्राइंग टू एप अ जॉनरा जो इंडिया ने भी वेस्ट से एप किया हुआ है, लाइक सोप। अब इंडिया में एक ख़ास किस्म की आज़ादी है, यू कैन बी you know wearing very revealing clothes and everything, and you can be saying all sorts of things, and you can afford to be glamorous there because huge population है, tax payers बेइंतहा हैं जिनकी वजह से बहुत सारा पैसा जमा होता है और उनकी एडवर्टाइजिंग जो बजट है पूरे इंडिया का बहुत ह्यूमंगस है, लिहाजा हर प्रोडक्शन can afford to be highly glamorous. They can drug a mass audience of India, जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे गुर्बत वगैरह 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 है, उससे मुतासिर होकर हमारे मेरा ख्याल है कि ज़रा कम समझ वाले मार्केटियर्स ने टेलीविज़न चैनल्स पे, चाहे वो स्टेट चैनल हो या प्राइवेट चैनल, सब पे एक ख़ास किस्म का प्रेशर डाला हुआ है कि जी दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल टू द कमर्शियल सेक्टर। लिहाजा आप ये रंग, ये चाल, ये ढाल, ये बातें, यही तो अलमिया, गुफ्तगू करें, यही तो अलमिया है, ये अलमिया है। आप बजाय ये कर सोचने के you have done nothing about it. नहीं, they should call me up and they should find out what's acceptable to me. They should have you on their boards. जमाल, तुम्हारी आंखों में इतना सुकून है, इतनी गहराई है, मेरा बहुत दिल दुखा जब मैंने सुना कि तुमने अभी रिसेंटली शादी कर ली। क्यों? फ़ोन करके हाल ही पूछ लेते शादी करने से पहले। कमाल है। अब कहना है How did the marriage come about? Please मैं tell me नाजी first. कह सकता हूँ Of course, Jamal. Of course. How can you forget the good days that we spent? पता होता। Of course. You don't have to be formal at I all. would have knocked the door. Come on, we have a history. We've been to. I mean, मैं नहीं भूली early 80s की वो यादगार शाम में वो फरीदा खान की ग़ज़लें, उनका गाना, वो हमारा वहाँ बैठना. What a great singer. Yes, and every time my dead husband would get too involved looking for Farida Khan, I remember you pinching me at the back, huh? It was you, na? Farida Khanum used to be beautiful. Hi, she was really beautiful, very attractive woman. और आवाज़ उनकी बड़ी मेटालिक, बड़ी खूबसूरत आवाज़। I wish उस कैलिबर के सिंगर्स होते आजकल भी। Jamal, you have such a beautiful voice. तुमने क्यों नहीं गाना सीखा? I wish I had time. गाना नाजी ऐसा है कि गाना आपको अच्छी तरह पता है कि अगर आप दिन में अगर 24 घंटे हैं तो 25 घंटे अगर आप म्यूज़िक की टर्म्स में ना सोचें और 4-5 घंटे रियाज ना करें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको गाना चाहिए। लिहाजा दैट्स व्हाई आई नेवर डेयर टू सिंग। आजकल मेरा दिल चाह रहा है कि मैं गाऊँ, इसलिए कि दिस सो मच हैपनिंग। आजकल ऐसा क्या है? People have made music so easy. I know. They really have. 5 or 4 easy ways to music. I should join a class. मुझे देखकर कोई गाना जहन में आता है या कौन सा गाना जहन में आता है? हमसा हो तो सामने आए। हाय जमाल, thank you so much, really. You're welcome. अच्छा, coming back to your marriages. I mean, how did the recent one take? Marriages? Marriage जो अभी दिसंबर में हुई. जी। Let's talk about that. कैसे मुलाकात हुई? कौन है? My wife's name is Amna and she was my student. She's a sculptor and a very charming young lady. बड़ी pleasant वो है। I mean, I think
वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं इंसान की ज़िंदगी के, पर्सनालिटी के, पर्सोना के जिसको मेरा ख्याल है कि ज़रा गैप्स होते हैं जो फिल करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई रियलाइज्ड कि जी उन गैप्स को फिल होना चाहिए। देयरफॉर आई गॉट मैरिड टू दिस पर्सन एंड शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन। तुम्हारा ताल्लुक बलूचिस्तान से है? हाय, मैं कभी बलूचिस्तान नहीं गई, अब कोई ले जाने वाला ही नहीं है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि उन संगलाख पहाड़ों की चट्टानों पर सज्जी खाऊं, कारिज़ों का पानी पीऊं, किसी कबायली सरदार की मेहमान बनूं, मगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ। जमाल, मोस्ट वेलकम, व्हाई नॉट, क्या? लेट्स प्लान अ विजिट। बताएं ना, कब लेकर जाएंगे? आजकल तो हालात ज़रा बिगड़े हुए हैं। ये बिगड़े हुए हालात के बारे में तो मुझे थोड़ा सा एजुकेट करें। नाजी देखें बिगड़े हुए, आप यू नो द बैकग्राउंड वेरी वेल के बलूचिस्तान आई थिंक इज़ द मोस्ट डिप्राइव्ड place on the face of earth, despite being you know rich in resources, natural resources. अब गैस को ही ले लें, किस ज़माने से गैस वहाँ से निकल के पूरे पाकिस्तान को आबाद करती रही है, करती जाएगी, बट एक ज़र्रा भी उसके जो यानी बेनिफिट्स का है, एक ज़रा भी बलूचिस्तान को नहीं मिल रहा है। इफ़ यू विजिट बलूचिस्तान, बलूचिस्तान इज़ लाइक अ वेस्ट लैंड, कुछ भी नहीं है। जिसको दारुल हुकूमत कहते हैं क्वेटा, दैट इज़ वर्स देन गुजरांवाला। वो चीज़ रियलाइज़ नहीं की गई है, कभी मौका नहीं मिला है। तो बुनियादी तौर पे वो डेप्रिवेशन जो है उसी की वजह से वो ग्रीवेंसेस सामने आई है। और हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि सेंटर जो है वो उनकी बात सुने और माने। दे हैव नेवर गिवन अ डैम। उनके मसले का मेरे नज़दीक हल ये है कि पाकिस्तान में जितने भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जितने प्रोविंसेस हैं, सबका रिसोर्सेज में जो रिसोर्स पूल में हिस्सा बराबर होना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब पंजाब में प्रोविंशियल असम्बली है, सिंध में है और बलूचिस्तान में है, फ्रंटियर में है, जितने भी तादाद है ठीक है, पंजाब की आबादी ज़्यादा है, सिंध की उससे ज़रा कम है, फ्रंटियर की उससे ज़रा कम, बलूचिस्तान की उससे ज़रा कम, प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं ठीक है। नेशनल असम्बली की तरफ जब हम आते हैं तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि तमाम प्रोविंसेस की इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगर 50 पंजाब के नेशनल असम्बली में मेंबर्स हैं तो 50 सिंध के होने चाहिए, 50 फ्रंटियर के, 50 बलूचिस्तान के। फिर उनको एहसास होगा कि वो बराबर हैं एंड दे विल बी एबल टू एड्रेस द इश्यूज़। जमाल, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हर इंसान की ज़ात के अंदर, हर मर्द की ज़ात में और हर औरत की ज़ात में भी ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। एब्सोल्युटली। इसका बैलेंस्ड होना, एज इन द मैन एंड द वुमन विद इन यू एंड द मैन एंड द वुमन विद इन मी, उसका बैलेंस होना एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। ये ना हो बैलेंस, इम्बैलेंस तो फिर आपको एक अजीब मसले में डाल देते हैं ना। आप अजीब गरीब अंदाज से बिहेव करने लग जाते हैं। यू कैन बी मिजरेबल, यू कैन बी वेरी एग्रेसिव, यू कैन बी अनप्लेजेंट, यू कैन बी मोरोस। बैलेंस ये है कि बैलेंस आपको पॉजिटिव बना देता है, बैलेंस आपको फियरलेस बना देता है, जबकि इम्बैलेंस आपको फियरफुल बनाता है। हाउ डज वन क्रिएट दैट बैलेंस? देखें, बाय एक्सेप्टिंग एंड अप्रिशिएटिंग द डिफरेंसेस। एक औरत जो है मर्द से मुख्तलिफ है। मर्द औरत का रोल नहीं प्ले कर सकता है, औरत मर्द का रोल नहीं प्ले कर सकती है। बोथ हैव अ रोल टू प्ले। They should complement each other. They should allow maximum freedom, maximum space, maximum air to each other. Would you agree with me if I said that honesty, self-honesty would be one of the keys to really achieving that balance? Absolutely, absolutely. देखें, आपके अपने मतलब अपनी सही समझ जो है वो सिर्फ उस वक्त आप अचीव कर सकते हैं कि आप सेल्फ क्रिटिकल हो जाएं। सेल्फ क्रिटिकल होने के मानी ये है कि आप ऑनेस्ट हो अपने साथ। ऑनेस्टी जो है वो आपको बैलेंस का रास्ता दिखाती है। और रसूल यानी
Prophet Muhammad जगह जगह बैलेंस की बात What is करते your थे. connection with God? My connection with God is very direct. Obviously, because you're an मुझे artist. मीडियम्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब Hmm. इंटरमीडियरीज की ज़रूरत नहीं है. Hmm. It is very direct. Hmm. My father was a very pious man. Hmm. नमाजी परहेजगार, पुलिस के महकमे में रहने के बावजूद ही वॉज वन पर्सन जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक टेडी पैसा, एक पाई Hmm. रिश्वत नहीं ली, जिन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमारी सिफारिश कभी नहीं की स्कूल्स में. उनकी गाड़ी में हम बैठ नहीं सकते थे. वी यूज़ टू वॉक टू आवर स्कूल्स, जो 2 मील या 3 मील दूर होता था. मेरे वालिद साहब की गाड़ी में हम बैठ के नहीं जा सकते थे. तो ट्रेनिंग हमारी ऐसी थी कि आई वाज वेरी रिलीजियस, और उस ट्रेनिंग के थ्रू मुझे पता चला कि देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ डायरेक्ट वे टू गॉड. You just mentioned your father. वो वक्त, वो traditions, वो training, वो upbringing, वक्त कितने बदल गए हैं तुम्हारी वाह. नज़र में? ये अच्छा वक्त है या बुरा वक्त है? वक्त को एक ख़ास मोड़ देना, ख़ास डायरेक्शन देना हमारा फ़र्ज़ है. वक्त ख़ुद से तो ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, जो हम कर रहे होते हैं वो उसको अच्छा या बुरा बनाता है. तो इस वक्त हम क्रिटिकल एक उससे गुज़र रहे हैं, हालात से, जिसको संभालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है. हमारे बेशुमार मसाइल हैं हमारे माशरे में. एक्सट्रीमिज़म, जिसके ख़िलाफ़ बड़े ड्रम्स बीट किए जाते हैं. Everything that you say, मैं हर चीज़ के साथ मुत्तफ़िक हूँ, और मैं हर चीज़, these are all the things that I have maintained for all these years also. मैं भी यही बातें बोलती रहती हूँ. खैर, अभी थोड़ी देर पहले कनेक्शंस की बात हो रही थी. I'll tell you something very interesting. I got another mobile connection. Really? चाहने वालों Which की one? तादाद इतनी बढ़ गई थी, इतनी How बढ़ many गई do you थी. have? I couldn't accommodate them on one mobile connection, so I had to get another one. But you know, somehow I can't feel connected to any one of them even. And the one I feel connected to is already connected to somebody else. हाय जान, मुझे भी कहीं कनेक्ट करवा दो, मुझे भी कोई ढूंढ दो अपने जैसा. ठीक है. कोई है नज़र में? I'm sure there'll be millions. हाय, कोई पठान हो तो और भी अच्छी बात होगी. पठान तो बहुत ज़्यादा है. हाय मेरी जान जमाल, you such a darling really. Are you fond of traveling? I have travelled. मैंने दुनिया देखी है, लेकिन मुझे मतलब कोई ऐसे अर्ज नहीं महसूस होती कि मैं उठ के कहीं चला जाऊँ. I've called a friend of mine. She's my travel agent. Works at the American Express. अभी अमेरिकियों की बुराइयां कर रहे थे हम. मैं भी करती रहती हूँ, नाराज़ रहती हूँ उनसे, लेकिन मैं अपने टिकट अमेरिकन एक्सप्रेस वालों से ही बनाती हूँ. You know, better organized. उनकी efficiency तो आप ज़ाहिर है माननी पड़ती है. But you know, I'd gone to her the other day and she told me such an interesting story about her life. You know, that Jawaharlal Nehru had a crush on her. Really? Jawaharlal Nehru had a crush on her when she was, of course, much younger. She's here tonight with me. So I'd like to invite her inside. Fantastic. Step right in, Shehla Ali Khan. Hello, how are you? Jamal Shah. शहला, हम एक दूसरे को इतनी दफ़ा नहीं मिली, लेकिन जब से मैंने तुम्हें जाना, तुम्हारी कुछ बातें जानी, मुझे यकीन है कि अब हम मिलती रहा करेंगी और अच्छी दोस्तें बनेंगी. हाँ, you know, when I found out that Jawaharlal Nehru was swept off his feet when he saw our Shehla Ali Khan, I was amazed, really. And I thought I have to have Shehla come over to my drawing room and share her very interesting life with me and my viewers. Tell me, what took you to India, really? I'd just gone on a visit because Muhammad Ali Bogra at that time, who Prime Minister, was visiting. And I was staying with the High Commissioner, who was then Raja Ghadamfar Ali Khan. So they took me to Rashtrapati Bhavan, where there was a reception. And Pandit Nehru came along and he said, I hope you're coming to my dinner. And I said, I haven't been invited. He said, Raja Sahab, ye kya baat hai? इनको आप ज़रूर लेके आए. And you know, Maulana Abul Kalam Azad was there too, and you know, they just surrounded me. I was absolutely flabbergasted. As a young teenager, I was absolutely so excited. So the next evening, I was taken to the dinner,
And after dinner, I was sitting with the High Commissioner, and he came along and he said, "You will, Raja साहब को तो आप मिलती रहेंगी, आप हमारे पास आके बैठे." So you know, Muhammad Ali Bogra and his wife were there, but I was given the place of honor. So I went and sat next to him. It was so refreshing, and for a young girl, it was really wonderful to be made so much fuss by a man like him. I wish you had discussed Kashmir with him. Well said, really. No, but he must have been a very charming man. I mean, to have He charmed was, Lord no doubt. Mountbatten and Lady Mountbatten both. Yeah. I mean, the man must have had something in him, really. How did you find him as a person, really? I thought he was, little that I saw him, you know, we never got, I mean, to the extent that I would know him as a person. But to me it was, he was very charming, good looking, very charming. And he made me feel like, you know, very important. And, you know, women love that. I know, Jaan. Tell me about that. I remember my good old days, जो बहुत पहले नहीं थे. But उसके अंदर भी, अच्छा, you mentioned somebody's insecurity, or insecurities rather. Well, I feel our men are very insecure. They're so scared to talk to women. You go to a party, all the women are sitting one end, men are sitting the other end, and you know, they're always sort of looking at you like that, and they pass snide remarks and say things like that, and they're dying to talk to you, get on with you, but they just don't, they'll do anything behind the parda. But when you come out in the open, they don't, they just, they think, you know, and if a woman is good looking and attractive and talked about and well known, that scares the hell out of them. You know, Jaan, it's so good to see you. You're looking lovely, really. Looking absolutely stunning. Not more lovely than But you. you know, that's so sweet of you. Thank you so much. But you know, अभी मर्दों की insecurity की बात हो रही थी. I think more than men, it's the husbands who are insecure. मेरे Without गुजरे हुए, fail, yeah. my, you know, of course, गुजर गए, लेकिन जब तक हयात थे, जिंदा थे, हर वक्त insecure रहते थे. And you know, with an innocent angel like me, I mean, he had no reason to be insecure, really. You've been married more than once, really. In fact, 4 times, if I'm not mistaken. Huh? You've been through 4 husbands. Jaan, you should be given a medal for that, really. Really, you should be given a medal for that. It's about time I received something. मेरे लिए एक मुश्किल था, मैं तो एक को बर्दाश्त करना मुश्किल था मेरे लिए. And you sort of But my had 4. circumstances were different. You know, I had to have somebody to look after me. I didn't have anybody. And all my husbands were old. And the one nice husband that I got, he was sick and he died. Oh. So, Tell me you know, about- it's just apni kismat mein nahi hai. Nahi, tell me about him. Tell me about the one who passed away. Oh, he was just wonderful. He was a Pathan from Jalandhar. I see. I told you I want a Pathan too. I just told Jamal before you came in that I need a And husband. he was very good looking, very charming, very good looking, the most decent human being I've ever met. And he had cancer. Even before I married him, I knew he had it. Oh, and But you still he was chose such to? a wonderful man that I thought whatever time we can spend together, it will be good time for me. But I didn't realize how painful it was going to be when I lost him. And that's one of the reasons now I wish I hadn't married him, because the pain of losing him was too bad, too much for me. And I just haven't got over the depression. It's now 19 years I've been living alone. I haven't got over the depression. Just seeing him go, and I couldn't do anything. I dragged him around to America, to England, everywhere, gave him all, they treated him, and towards the end the doctor said there's nothing more we can do. I know. I've lost friends to cancer, and I know how painful and how traumatic it can be, especially for the person who's suffering, and also for the people who love the person who's suffering. What are you doing this Sunday? Lunch? Sunday lunch, oh, I'm going to have lunch with some friends who are having special paya made, Oh, how because nice. some friends have come from where? Dallas. कौन friends हैं ये? ये जो Dallas बहुत से आए अच्छे हैं? लोग हैं. पाए इनकी बीवी मेम है, ये खुद पंजाबी हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं ये, और जिनके घर हमें लंच पे बुलाया गया वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त I was हैं. going to invite you for lunch to my place on Sunday.
somebody very special was going to come over, and I'm sure कि आपको देखेगा तो he'd probably flip over you. Oh, lovely, how nice. But you still, Please do yeah. invite I mean, you still me. look beautiful. It's only going to be this Sunday. Doesn't matter. We can keep it for next Sunday, maybe, huh? Each pies. हाँ? पाए खाती हैं आप? आप नहीं खाते क्या? पता नहीं, आपको नहीं पसंद? मैंने आज तक चखे भी नहीं। है तो फिर मैं क्यों खाऊंगी? आइंदा कभी नहीं खाऊंगी। अच्छा, लेकिन वैसे आपको क्या पसंद है खाने में? मैं मेरा ख्याल शायद नकली पठान हूँ, मैं सब्जी ज़्यादा पसंद करता हूँ। I अगर mean- गोश्त खाना हो तो कबाब की सूरत में। अच्छा। I can't eat chunks of meat. I- Can't handle them. हाय, मैं भी कबाब बड़े अच्छे बनाती हूँ। अच्छा। आइए ना, अगले हफ्ते You अगर must फारिग हैं invite तो me. शैला को भी लंच पे ठीक है, बुला मैं लेंगे। आपको draw आप भी कर आ दूंगा। जाइएगा, मैं भी I'll do हूँगी। a portrait of yours. हाय, please you have to do ठीक that also, and my sculpture too. You did a film also on the field of arts, really. I did a क्या नाम था? series of Series, TV TV. show? जी, Yes, I've seen I you. did a series for television on Pakistani art. जी। जी. और कोई आपने ट्रैफिक भी Traffic was a 6-part drama serial that I was part of. It was a British production, Channel 4, and the cast came from Germany, UK, and Pakistan. So I was the protagonist from Pakistan. I played a poppy grower who ends up becoming a drug pusher and then eventually kills the drug baron. Shehla, you've had a wonderful, wonderful life. You've lived a full life, really, and you've come across many people. You've been fortunate enough, really, to come across a lot of people in life. Abhi Zafar Iqbal ka zikr kiya. I know that you have friends in the bureaucracy. You have associated and socialized with some of the leading statesmen that this country has seen, जिसमें ZAB का नाम भी शुमार होता है. You were very close to Zulfikar Ali Bhutto, and I was very, very fond of him, and I was jealous of her always, you know, कि ये ज़्यादा करीब क्यों है? How did you find ZAB? ZAB, he was a friend's friend. He was really a good friend. With him, my relationship was real buddies. There was nothing more than that. And till today, the family, you know, they're all very fond of me because he was a friend of mine. Acha, tell me about your German connection. You know, I'm very fond of Pathan आदमियों के बाद मुझे German मर्द बहुत पसंद है. अच्छा. Yes. And you were married to a German. I was, for a short while. How long was the short while? That was, 4 years. That was the worst period of my life. Oh. Absolutely the worst. हाय, तुम्हारी बातें सुन के मुझे ये लग रहा है कि तुम्हें जर्मन तो बिल्कुल याद नहीं होगी, भुला दी होगी. I don't want to think of it, but I have a son from that marriage who's the most beautiful child anybody could have. Really? You know, I was just going to come to this actually. How many children do you have? I have 3 sons, Okay. and they're all in America, and they don't want to come back here. There are no roots left here. You know, I'm an Afghan. I come from the Afghan royal family, which was exiled and brought into Pakistan. And you know, I was the youngest, and everybody is gone. Brothers and sisters, parents, uncles, aunts, everybody. I hardly got any relatives here. I live in Pakistan because of my friends. I have wonderful friends here. This is my country. I love it, and I couldn't live anywhere else, even though I'm an American. But you know, अब मेरे से दोस्ती हो गई है, आती रहना मेरे पास. I'll be a very, very useful friend in many ways also. Jaan, tell me something nice and spicy and something interesting. You've had a nice, interesting life, really. मर्दों के बारे में क्या जाना? In which way? As individuals with their egos and with their Men are like little boys. Actually, they're like little boys. As long as you pander to them and cater to them, they're very happy. They love you, and you make them feel important. They want to be machos. You make them feel that there's nobody like you and can't live without you. I'm totally dependent on you, and he'll be eating out of your hand. And you might be doing something else behind the scene. That's true. Do you agree with that, Jamal? I do, of course, yes.
What about you, Jamal? अभी हम we talking about her children. आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं. मैं बेबी इज़ ड्यू इन अप्रैल इंशाल्लाह. Okay, that's going to be your first baby then. फर्स्ट मैरिज से हमारे बच्चे नहीं थे. अच्छा, this is going to be your first baby. जी. Then. Are you excited about it? I never thought के मैं जब भी सोचता था ज़िंदगी के बारे में, I never thought के कोई lineage ज़रूरी है और heirs हो, ये हो, वो हो, because end of the day जब आप नहीं होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आप कब्र की किसी खिड़की से लोगों को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कौन आपके बारे में क्या कहता है. Who gives a damn? Who gives a damn? लेकिन अब जब ये सिलसिला हुआ तो it's a nice feeling. Coming back to your children, what kind of a relationship now do you have with them? living there? Excellent. They're friends. Okay. They're my buddies, they're my friends, we laugh together, we talk about everything openly. We have no, you know, that kind of old-fashioned mother-son relationship. We talk just like buddies and friends, we talk on every subject. Shehla, I'm so impressed. Really I am. And I'm so happy for you. Really I am. We Well, have to spend more time together. We have to meet more often, हाँ? अब देखें ना, मेरी तो इतनी तबीयत खराब है. आप काश कि कोई होता जो मेरे लिए भी कोई कंसर्न. कुछ ले रही हैं, डॉक्टर के पास गई हैं कि नहीं? अब I जाके wish I was a पूछा. doctor. उस वक्त से आप देख रहे हैं. आप ही बताइए कोई डॉक्टर. बताइए ना जमाल जी. I could become a doctor. Hi. Now that's one of the best things any man has ever said to me. Sure. मसीहा है आप तो. मसीहा. Jamal, sing for me. छोटी छोटी ख्वाहिशें मेरी. That's like, you know. But you're amazing, I must say. Thank you so much. You look पता नहीं अचानक में fantastic. क्या, I don't know क्या गाऊँ मैं. Anything you want to sing for me? पश्तो गा दूँ? हाँ, I'd love to hear a Pashto song. गुलदे दरेदी माला ये रावड़ा द तुरोर बल द पास चतर जोड़ा मामा. ये फोक सॉन्ग है, पुराना It's है. sounding beautiful. यार में काफिर ज मुसलमान यम गुलदे गुलदे दरीदी माला ये रावड़ा दयार द पार दरम साल जरू कवामा गुलदे दरीदी माला ये रावड़ा द तोरोर बल द पास चतर जोड़वा. Hi, that's That was beautiful. wonderful. Really. Very nice. Hi, you. it sounded Thank you. so nice. अभी बता दो ना कि क्या मेरी क्या तारीफें की. हाँ, रेदी एक फूल का नाम है, which is the desert flower. के my beloved is like the desert flower, and I'll, you know, keep it in my hair, or adorn my hair through my beloved. And then the next line is about the content is secular. यार में काफिर ज़ मुसलमान हैं, कि मेरा यार काफिर या हिंदू और मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं यार की खातिर धर्मसाल में उनके बुतकदे में झाड़ू देने को तैयार हूँ. Hey, that's such a wonderful thought, really. Really such a wonderful thought. Shehla, are you into music? You like music? Oh, I love music. You like all kinds of music? Yes, I like our own classical as well as pop. Anyway, Bryan Adams is coming to Pakistan, so these two girls will go watch Bryan Adams in Okay. concert. ठीक है, it was lovely having you over, Jamal. Pleasure. Thank you so much, really. Thank अब you. आते रहना, गायब ना होना. It was lovely having Jamal Shah and Shehla Ali Khan this evening in my drawing room. और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आप सबको आज की ये मुलाकात इन दो बहुत ही मज़ेदार शख्सियात के साथ, जिन्होंने बहुत ही भरपूर ज़िंदगियाँ गुजारी हैं और गुजार रहे हैं, मुझे यकीन है कि आपको ये मुलाकात पसंद आई होगी. आज मैं थोड़ी बीमार थी, तबीयत नासाज थी, लेकिन उम्मीद है कि इसके बावजूद आप लोगों को पसंद आई होंगी. अपना ख्याल रखिएगा. अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. हाय, मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि जल्दी ठीक हो जाऊँ. नज़र लग जाती है ना, और अगर किसी को कोई अच्छा टोटका आता हो नज़र उतारने का तो प्लीज़ मुझे लिख भेजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा.
खुदा हाफिज। नवाजिश।